So what we were talking about, the digestive system, right? Aniket, how many layers of the GI tract? कल का लेक्चर लिया आपने? क्यों? कल के लेक्चर में पूरा इवोल्यूशन, पूरा डेवलपमेंट को समझाया है, लेना है ना ऐसे? मॉर्निंग में बैठ के अगर क्लास नहीं आते हैं तो किसी दिन मॉर्निंग में ले लेना उसको, ठीक है? सो दैट द नेक्स्ट वन इज मच मोर कनेक्टेड. ओके, चलो. श्रीराम, हाउ मेनी लेयर्स? व्हाट आर द नेम्स? एंड सेलोसा. ठीक है, देखो. So we were talking about the GI tract have the mainly 4 layers. What are the layers? Now you can, acha, in diagram if such type of questions comes, you can make simple this diagram. Okay? Okay, so this is your submucosa, this is mucosa and this is muscularis and externa. उसको छोड़ दो. तो what we are seeing, जो mucosa है वो सबसे inner side वाली lining है ना? हमने कल करा था lamina propria, epithelium and muscularis mucosa. अच्छा, उसको भी रहने दो, इससे बेटर ज्यादा समझ जाएगा. ठीक है, देखो. सबसे इनसाइड के लिए, okay, what is this? This is a cavity where the food is rotating. Yesterday we have talked about the evolution of that, the pituitary, deuterium, proterostome 2. Okay, so this is the area where food is rotating. Suppose that if this is a stomach, okay, if this is a stomach, so this is the area where the food is rotating. That is this. Okay. After that, what we are going to talk about? So this is the first layer. That is your mucosa. Inside of the, like सबसे inside वाली layer कौन सी होती है? Mucosa. Why? Because inside की जो layer है, that secretes the mucosa, secretes the mucus. Mucus is mixing up with the food and it help in passing out that food from one organ to another organ. ठीक है, ये देखो mucosa दिख रही है, ये आपकी cavity हो गई. This one is a cavity. Mucosa has 3 layers. The inner side is epithelium. After that, lamina propria, and after that, muscularis mucosa. Yesterday we have talked about that. Mucosa के बाद कौन सी layer है आपकी? That external. ऐसे consider करो. So there is a pipe. आपने pipe को ऐसे open कराया तो उसकी बहुत सारी layers निकलती चली आ रही है. But inside of the pipe, that is cavity. ठीक है? So that is submucosa. Submucosa में देखो क्या structure है. ये आपके नीट की टाइम पे क्वेश्चन आता था और नेट में भी क्वेश्चन आता है. ठीक है? सबम्यूकोसा में क्या है? ग्लैंड्स है और डक्ट्स. ये देख रहे हैं, ये ग्लैंड्स जहां से आपका क्या सिक्रीट होता है? द एंजाइम्स, राइट? दैट इज योर गैस्ट्रिक जूसेस सच एज योर ग्लैंड सिक्रेटिंग द पेप्सिन, है ना? ये जिस भी एरिया के, सपोज दैट अगर ये स्ट्रक्चर हम अगर स्टमक का कंसीडर करें, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, तो उसका हो गया. इंटेस्टाइन का कंसीडर कर लो तो उसका हो गया. लार्ज, इट स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ और वो पूरा ट्रैक्ट 4 लेयर से ही मिलकर बना. ठीक है, सब म्यूकोसा हो गया. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस. ये देखो, ओके, so this is your first layer inside, this is your second layer, and that is your muscularis is your third layer. So muscularis, we are seeing it is completely made up of so much red. So that means जो absorption हो रहा है, so first layer is giving the protection or secreting the mucus. Second layer is secreting the enzymes, that is whatever the enzymes and whatever the part of that.
Third layer, because after the secretion of the enzyme, the food particle get digest, right? And the digested food particle get absorbed by the blood vessels, and that blood vessels are present in that muscularis. देखो सर्कुलर मस्कुलरिस, इसका ये याद रखने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट इमेजिन दैट जो कितनी रेड रेड है ना. और नर्व सिग्नल भी उसी में ही होते हैं. समटाइम्स यू इवन फील, अच्छा, दैट इज तो बेसिकली वी नो दैट आवर ब्रेन हैज दैट थर्स्ट सेंटर, एपेटाइट सेंटर, वॉमिट सेंटर. तो एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज कनेक्टेड विद द नर्व. नर्व आपकी फोर्थ और थर्ड दोनों लेयर में होती है. एंड लास्टली सबसे क्या है आपकी सिरोसा. सिरोसा में आपकी दो लेयर है, एक आपका कनेक्टिव टिश्यूज है और एक आपका पेरिटोनियम है. सो अगर आप कुछ भी नहीं याद कर रहे हो, सो स्टिल इफ यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग दिस वर्ड पेरिटोनियम, सो पेरी मीन्स आउटसाइड, पेरीफेरी बोलते हैं ना सर्कल की पेरीफेरी, राइट? सो व्हाट इज द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल? द आउटसाइड लेयर ऑफ. समझ आ गया? दिस इज गुड टू इमेजिन नाउ. ठीक है. सो पेरिटोनियम इज द मोस्ट और द सिरोसा इज द मोस्ट. सिरोसा का फंक्शन क्या होगा? What can be the function of the serosa? Which kind of layer would be forming the serosa? Which kind of layer would be forming the serosa? Aniket? Serosa is outermost, है ना? These all track, these all four layer, we are talking with this epidermal protection. सबसे thick होती है आपकी serosa. Suppose that अच्छा आप लोगों ने खैर वो नहीं करा, तो अगर मैं स्किन को अगर रिमूव करूं तो सबसे आउटर वाली जो स्किन है वो सबसे थिक होगी, बिकॉज इट हैज टू प्रोटेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ इंजरी. सपोज दैट समटाइम स्क्रैच लगता है बट स्किन रिमूव नहीं होती, बट उतनी इंटेंसिटी का स्क्रैच अगर आपके इंटरनल ऑर्गन पे लगेगा देन इट विल कॉज द इंजरी. समझ आया? सो दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर. द मेजर फंक्शन इज दैट एक्सटर्नल प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी. समझ आ गया? So that is called the, guys listen, that is called the closed circulatory system. ठीक है? What does that mean? That means simple, आपका जो स्टमक है, आफ्टर दैट जो आपकी इंटेस्टाइन है, ये ब्लड में डूबी हुई नहीं है. These organs are not bathing in the blood, unlike the open circulatory system. We have the two circulatory system. The organism, the animal kingdom has a two type of circulatory system. One is closed and one is open. So look, that is the closed one. Your blood vessels are properly arranged in one of the layer. Open circulatory system में क्या होता है? जैसे cockroaches में. So when you will cut, अगर suppose that मैंने body को cut करा, तो आपका stomach जो है वो blood में डूबा हुआ नहीं निकलेगा. Blood properly अलग से stomach निकलेगा, right? But suppose that if I cut the body of the cockroach, उसका स्टमक डूबा हुआ है, क्योंकि इन दैट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड. वहां पे जो कॉकरोच में जो ब्लड है वो ऐसे ब्लड वेसल्स की फॉर्म में नहीं है. थैंक यू. वो प्रॉपर्ली डिप्ड है. गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ गया? क्लोज्ड एंड ओपन. प्रणव पक्का? इनमें से जो डायग्राम अच्छा लगे वो बना लो. देखो एक मिनट बनाओ. सिमिलर स्ट्रक्चर इसमें है. ये देखो क्या दिख रहा है? ये स्टमक वाला रीजन दिख रहा है ना? इट इज शोइंग स्टमक वाला रीजन एंड देन we have just ऐसा opened up the skin, है ना? अगर सपोज आप यहाँ पे हल्का सा जो सिवेरियन वो होती है नाइफ और ये सब जो होती है वो बहुत ही फाइन होती है. ठीक है? अगर आप चाहोगे कि सिर्फ एपिथेलियम का अपर लेयर निकले तो फिर सिर्फ अपर लेयर निकलेगा. जब हम लोग ने माइस को डाइसेक्ट करा था तो उसका टारगेट ये था, दो माइस, एक माइस में लेते 3 लोगों के बीच में, कि उसकी क्योंकि हम लोगों को परमानेंट स्लाइड बनानी होती है. दैट इज व्हाई आई कैन एक्सप्लेन दैट. So permanent slide जैसे कि लंग, किडनी, टेस्टिस एंड दिस एंड दैट, तो उसकी स्किन को ऐसे रिमूव करना था, खींच के, लाइक स्ट्रेच करके, सो दैट अ सिंगल अमाउंट ऑफ ब्लड शुड नॉट कम. समझ आ रहा है? तो मतलब हमने पूरी इसकी स्किन निकाल दी, दैट फर वाली लेयर, फिर भी ब्लड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड लीक हो गया तो ऑर्गन डेड हो जाएंगे, और अगर ऑर्गन डेड हो जाएंगे तो परमानेंट स्लाइड अच्छी नहीं. समझ आया? सो एवरी ऑर्गन, जैसे कि आपका बाहर से हम देख रहे हैं स्किन की मल्टीपल लेयर से, कभी कभी स्क्रैच लगता है, सो वी सी अ स्लाइट व्हाइटिश कलर की लेयर, और उसके अंदर वाली लेयर में ब्लड वेसल्स. आपकी स्किन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पे बात वेटिंग नहीं कर रही है. ठीक है? हाँ, जैसे सिंह देखो इसमें भी ये वाली चीज है. सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? म्यूकोसा, है ना? मस्कुलर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर आपका मस्कुलर, ये ज्यादा बेटर नहीं, वो ज्यादा बेटर.
ठीक है, हाँ प्रणव, यू आर आस्किंग समथिंग। इंटरनल प्रोटेक्शन, लुक एट टू मी, आप पूछो। कहाँ की है ये लेयर? डाइजेशन की है। इंटरनल प्रोटेक्शन, आउटर प्रोटेक्शन, डन। दो आ गया। अब आप मुझे इधर लुक एट मी। नाउ देयर इज टू मोर लेयर। म्यूकोसा की सब ऊपर की है, सब म्यूकोसा, और उसके ऊपर की है मस्कुलरिस। हाँ, क्या फंक्शन नहीं आया? ये लेयर्स कहाँ पर है प्रणव? एक एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइम बाबा ये इतनी थिक नहीं है। एंजाइम जब रिलीज होगा ना प्रणव, तो वो अल्टीमेटली रिलीज होके इधर ही तो आएगा, क्योंकि फूड कहाँ पर है आपका? हाँ हाँ, सब म्यूकोसा से रिलीज होके इधर आएगा। और अब जैसे कि सिरोसा है, ठीक है, सॉरी मस्कुलरिस है, जैसे कि मस्कुलरिस। अभी अगर सोचो, जस्ट इमेजिन, अगर म्यूकोसा की जस्ट बाद हम मस्कुलरिस रख दें, राइट? सपोज दैट म्यूकोसा ऐसे कंसीडर कर लो, म्यूकोसा समझ आ गया, ठीक है। सपोज दैट इसके बाद सब म्यूकोसा है, उसके बाद आपकी मस्कुलरिस है। तो मस्कुलरिस में क्या, ये सारी लेयर्स हैं किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जीआई ट्रैक्ट की है ना, दीज लेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जीआई ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल में ही लेयर है ना। अच्छा, तो एलिमेंट्री कैनाल में मेजर फंक्शन क्या हो रहा है? पहले डाइजेशन होता है, फिर अब्जॉर्प्शन होता है ना। तो डाइजेशन किसके थ्रू हो रहा है? एंजाइम्स के थ्रू। तो एंजाइम्स कहां से सिक्रीट हो रहे हैं? उसके बाद क्या हो रहा है? डाइजेस्ट कर लिया आपने फूड, उसके बाद क्या हो रहा है? डाइजेस्टेड फूड विल गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल। वो ब्लड वेसल्स कहां पर हैं? डन। आफ्टर दैट internal protection and outer protection. That's it. End of the story. ठीक है, फटाफट make this diagram, that one. ये बनाना है। लास्ट टाइम पे जब मैंने लास्ट बैच में बनवाया था, तो ये वाला डायग्राम बनवाया था, वो वाला। इसके अलावा अदर देन दिस आप लोग बनाना फिलहाल तो। ऐसा करना, वेट वेट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसमें म्यूकोसा बनाना, सब म्यूकोसा बनाना, देन ये वाली मस्कुलरिस बनाना, और ये वाली सेरोसा बनाना। हाँ, एलसी याद करते थे ना नीट टाइम पे, पहले लखनऊ देन कानपुर, पहले लॉन्गिट्यूडनल देन इंटरनल सर्कुलर। आईएफएस में क्वेश्चन है ये वाला अबाउट दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको मेंशन कर लेंगे अभी। अभी वाला डायग्राम बनाओ, फिर आई विल गो टू दैट डायग्राम अगेन। अगर आप लोगों को बनाना है तो डायग्राम बना सकते हो, आई डोंट हैव द प्रॉब्लम, आई मीन इट्स अ गुड डायग्राम। प्लीज मेक दिस डायग्राम। चलो ये वाला बनाओ, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं, दो बना लो। मेक दिस डायग्राम। अभी ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर दिख रहा है, विजिबल है? ऑनलाइन गाइस, इज इट विजिबल? Ma'am, अच्छा, yes, what? could you zoom the image a bit more? The labels are not visible. Okay, do one thing. Okay, so do one thing, just make the diagram, ठीक है? Just like internal structure is like, okay, internal structure आप बनाओ ये वाला, ठीक है? उसको ऐसे करके कनेक्ट करके make the outer structure, फिर उसके साथ ऐसे कनेक्ट करके make that third layer. I'll dictate the name, but I'll do the zoom little bit more. अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, quickly make that. मैम Yes, Anjali. मैम जैसे कि आपने वो लिखवाया कि जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है ये 4 लेयर्स से मिलके बना है। Yep. मैम जीआई ट्रैक्ट स्टार्ट होता है माउथ से एनस, मींस माउथ से लेके एनस तक 4 लेयर्स से है। Yes, yes, yes. ओके मैम।
These layers are very, very thin, very thin. It's not like they're thick, okay? ये inside वाला lumen दिखा देना please. ये वाला जो area है ना, that inside जहाँ पे ये वाला, just mention that lumen. Lumen, where the food is actually moving. कल हम लोग ने पूरी एनाटॉमी की पूरा एवोल्यूशन समझ लिया है, ठीक है? उससे अगर कोई कंफ्यूजन होगा, दैट मींस अच्छा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल आर आल्सो फॉर्म पेट में आपका समझा था ना? तो लिवर अलग से बन रहा है, लिवर इज नॉट फॉर्मिंग फ्रॉम दैट एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल, ठीक है? ये कैविटी वाला एरिया जो हमने कल प्रोटेरस और डिट्रोस्टोम बनाया था, दैट एरिया ओनली is that cavity or this alimentary canal is connected with that liver? No, right? So liver is forming some different areas. बन गया? जल्दी बनाओ, बस उसको लेयर लेयर बनाते जाना है, सब चीज में एक चीज दिखाते जानी है बस, और कुछ खास डायग्राम नहीं बनाना है। सब म्यूकोसा में जस्ट शो द ग्लैंड्स, मस्कुलरिस में जस्ट शो द ब्लड वेसल्स, एंड सिरोसा में जस्ट शो द कनेक्टिव टिश्यूज, दैट्स इट। सिमिलर स्ट्रक्चर हम लोग मसल्स में भी बनाएंगे। देन आउटर वन इज कनेक्टेड विद द नर्व फाइबर, क्योंकि मसल्स एक्टिविटी आप लोगों के सिलेबस में है। Done online. Vishnu, if you are here or if you are taking the lecture, I have received your mail and I have already connected to you, है ना? उसमें मैंने आपको ऐड कर दिया है। Ma'am, I have not been added to a group that you made. You haven't added in that group? No. You give your number to me. Yes, ma'am, I gave it that day only. मेल में यार 3 लोगों का आया था, आई थिंक विचता एक का आया था, शाली यार आपका मेल मुझे क्यों नहीं आता? स्पैम में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने टाइम, आई विल सी दैट, है ना? अभी अभी आई विल सी दैट। ओके वेट, बन गया आप लोगों का डायग्राम? अनिकेत ऑनलाइन? चलो राइट डाउन। लास्ट हेडिंग क्या था? लैमिना प्रोप्रिया लिख लिया हमने। वी हैव रिटन अबाउट द लैमिना प्रोप्रिया। Anisha ma'am, I also sent my number in mail. Okay, you guys have sent your number in that mail only. Okay, I'll see then. Manisha, Manisha, आपको तो शायद ऐड किया है मैंने। I think I've added you. I'll check it again. ठीक है? मनीषा को I think there's a 3 student को I think मैंने edit किया है, but ठीक है, I'll see that again. चलो, right on. Next, muscularis mucosa. Lymphocyte and macrophages involved लिख लिया हमने इसमें. In that lamina propria, what was the last point? Acha, there's a one more point into that. Right on. In that lamina propria, we have to add some more thing. Lymphocyte and macrophages involved. Lymphocytes and macrophages involve in the immune responses against the microbes that may penetrate the epithelium,
the epithelium. जो आपने डायग्राम बनाया है guys, just mention there to just remember in one go. This is the internal protection, this is the outer protection. Just add this also. दिखा देता हूँ. Outside में longitudinal, inside में circular. First L, then C. Look, Aniket, longitudinal is outward. पहले यूपी की कैपिटल आएगी फिर कानपुर जाओगे ना. It's like that. LC ऐसे याद करते हैं. पहले कैपिटल को हम लोग वो दे देते हैं. Longitudinal is outer one and circular one is inner one. ठीक है. Lymphocyte and macrophages involved immune responses against the microbes that may penetrate the epithelium. लिख लिया ना. Next make the heading muscularis mucosa. C. Muscularis mucosa. It is a thin layer of smooth muscle fibers. It is a thin layer of smooth muscle fiber which increases the movement of stomach muscles, the movement of stomach muscles or GI tract muscles by many folds, which also helps in digestion, which also enhances digestion process and absorption, which also enhances digestion and absorption process. Full stop. इसका नाम ही क्या है? Muscularis, है ना? That means muscular person is much more capable for the movement, right? Next, इसमें movement of this layer ensures that absorptive cells are fully exposed. Absorptive cells are fully exposed to the content or absorb nutrients or absorbed nutrients. Next, submucosa. Second one layer. It is consists of areolar tissues. That binds the mucosa to muscularis. It contains the glandular network and ducts. Also, it shows a network of lymphatic vessels. Plus, with very fine blood vessels. Which receive the absorbed food molecules, the nutrients, which receive the absorbed food nutrients. First stop. The glandular network present in this layer
The glandular network present in this layer help in the secretion of enzymes, help in the secretion of enzymes which participate in the digestion process. Next point. It also contains extensive network of neurons. Neurons will be present in everywhere. It also contains extensive network of neurons as the known as submucosa plexus. Submucosa plexus. Or plexus of or plexus of Meissner. That is a bracket में लिखो, that is a part of CNS. अब ये muscles move कैसे कर रही हैं? They do not have something by their own to move. जैसे कि अच्छा आपके हाथ की muscles कैसे move करती हैं? Like what is the main thing in your body which is helping in the movement? Bones. That is one of the very important functions of the skeletal system. Suppose that अगर आपके हाथ से है ना bones remove कर दें, so can your muscle move? No. Actually your bones are helping in the movement. But stomach में तो कोई bones है नहीं, है क्या? नहीं ना? Then your stomach की muscle, your heart की muscle. That is why these kind of internal organs are enriched or supplied with the very large network of the neurons. That neurons is guiding them when to move and how to. ठीक है? वहां पे तो bones नहीं है ना, skeleton system तो नहीं है stomach में, नहीं है ना प्रणव? Next. मतलब अगर सपोज दैट अगर लाइव है ना, अगर सपोज दैट मसल्स कितने भी कम हो जाए, स्टिल बोन कैन मूव इटसेल्फ. बट अगर बोन हटा दूं मैं इस पार्ट का, तो दिस पोर्शन कैन मूव. तो मेजर तो वैसे तो लाइव ऐसे तो बोन कहीं पड़ी है वो भी नहीं मूव कर पाएगा, वो तो फिर डेड वाला कंडीशन हो गया ना. इंसान कितना भी पतला हो जाए बट द बोन कैन मूव, है ना. तभी तो स्केलेटन सिस्टम का मेजर फंक्शन, the muscles attached with the bones is helping in the movement, but actually movement is done by with the help of that joints and this and that. Next, muscularis. Next, muscularis. Third is muscularis. Muscularis of mouth pharynx. Muscularis of mouth pharynx. And some part of the esophagus, contains the skeletal muscles, which help in the movement, and producing the voluntary swallowing of food. Next, the involuntary contraction of smooth muscles. Here help in the breaking down of food particle. With such movement, and breaking down of the food particles with such movement. Involuntary, na, so aggressively they move.
आप माउथ तक तो अपना फूड अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, राइट? बट इफ इट एंटर्स इनटू द फेरिंग्स एंड द esophagus, आफ्टर दैट कैन यू voluntarily control it? That's breaking down a food particle, mixing it with the digestive secretions, and mixing it with the digestive secretion. Next point में लिखना, bundle of neurons present here are called mesenteric plexus. IFS question, how the nervous system help in the digestion process. समझ आ रहा है? अब ये अलग से नहीं लिखना होता है, यही पॉइंट में 10 मार्कर्स का था. कौन लिख के आंसर लाया था? दैट इज अ 10 मार्कर. प्रणव, you were writing that answer ना? That very long question, but it was a 10 marker only. Content was very limited. ठीक है? तो अब suppose that the question is how that neuron system or the nervous system help in the digestion process. So that is they are helping in the digestion process. Suppose that अगर ये bottle है, इस bottle में मैंने इतना पानी fill करा है, and if I am keeping this bottle in a static manner, ठीक है? So whatever the amount, and this water is a kind of muscle जिसके अंदर आपका food का digestion होना है. Suppose यहाँ पे food particle और ये आपका enzymes है. So static portion में they will definitely dissolve. But if it is continuously moving, then it will dissolve very quickly. अगर आप एक पानी में एक थोड़ा सा sugar dissolve करोगे, so that will also gonna dissolve at your own time. But when we stir it continuously, then it moves, then it dissolves very quickly. That is helping in the nervous system. So nervous system, with the help of that mesenteric and mesenteric plexus in the muscularis and the submucosa, help in the movement of the muscles of the GI tract, and that is how the enzymatic reactions get fastened up and the digestion process occurs. जो सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, वहां पे भी nerve pixel almost present at the end of your tip. The blood vessels का network और nervous signal का network is present almost at all of your body. ठीक है? अगर आपका सपोज है यहाँ पे अगर मैंने कुछ हॉट सा टच करा, आपने टच कर दिया, तो जरूरी तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे. You respond ना? Why? Because your muscle do not have anything, but that muscle point is actually attached with the nerve signal. ठीक है? तो हर जगह होता है. It is almost end up to the last वहां पर. Movement के लिए, recognition के लिए. Suppose that something enters in your GI tract which is not good, which is not healthy. तो उसके अकॉर्डिंग अब कौन बता रहा है कि ये प्रोटीन है ना? Nervous signals present everywhere. So mainly जो very strong, very dense होता है वो आपका या तो muscularis में होगा या तो submucosa में. ठीक है? अगर सपोज दैट इसके ऊपर मैं एक और लेयर कर दूं, बॉटल के ऊपर one more layer, तो सेकंड और थर्ड लेयर को if I'll move, suppose that ये bottle is made up of the 4 layers, inside, then outside, then the most outside. तो सेकंड और थर्ड लेयर को मूव करने पर इनसाइड वाली भी मूव कर पाएगी और आउटसाइड वाली भी मूव कर पाएगी. अगर मैं सिर्फ आउटसाइड वाली को मूव करूंगी तो मे बी तीनों लेयर्स मूव नहीं कर पाएंगे, है ना? इतना वेरी स्ट्रांगली. ठीक है? किसमें है? सेरोसा. Nerves are present everywhere, but majorly जो very dense network होता है वो आपका सेकंड और थर्ड में होता है, not in the first and the fourth. ठीक है? चलो, write down. Bundle of neurons present are called mesenteric plexus, which contains enteric neurons, full stop, sorry, comma, parasympathetic ganglia, comma, post ganglionic neurons. अब vomit center आपका ब्रेन में है. How your stomach is controlled with the vomit center? कहीं ना कहीं स्टमक से तो आ रही है वॉमिट, है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग हम अगर लगाएं, जैसे कि some people have that motion sickness, उनका प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने एक्सेस खा लिया, उनका प्रॉब्लम ये है that the brain is not balancing the kind of motion. आप लोग किसी में थोड़ा बहुत है, ठीक है? Your brain is actually controlling, it's not able to control that motion.
ठीक है. सो दैट इज हाउ दे आर रेगुलेटिंग दिस. अगर इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती है, अगर आपने इसको कर लिया, ये परमानेंटली सॉल्व हो जाती है. ठीक है, बिकॉज योर होल्डिंग ऑफ द नर्व्स to your stomach muscles become very strong, so that whatever the signal your brain is your eyes are giving to your brain, that is will not connect very that way कि आपका vomit regulate हो. ठीक है, आप कभी भी देखो किसी भी डिफेंस पर्सनल को मोशन सिकनेस नहीं होगा. इट इज अ ट्रैक. नहीं होता क्योंकि दे हैव द वेरी गुड मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कुछ एक्सरसाइज से कंप्लीटली क्योर हो जाता है. ऑल्दो दिस इज नॉट. हाँ, चक्कर आना, मोशन सिकनेस ना, ये परमानेंटली ट्रीटेबल है. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट द कोऑर्डिनेशन विद योर नर्व सिग्नल. तो ये और तो कुछ नहीं होता कि वॉमिट ही क्यों हो रही है, बिकॉज योर ब्रेन इज कनेक्टिंग द न्यूरॉन्स विद योर स्टमक. हाँ, नहीं तो है वॉट एवर यू आर टेकिंग, वही वाला ट्रैक तो बाहर आ रहा है. हाँ, कुछ वो प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी होगा ना, वो कहेगा इट शुड बी लाइक रिलैक्स समथिंग. वो कुछ भी अंतर नहीं रहने देगा क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है. हाँ, कुछ भी रहता है. आई नो सम ऑफ माय फैमिली मेंबर्स. चलो रेड ऑन. सिंपैथेटिक क्या लिखा, पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन्स एंड सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स. लिख लिया. एंड सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. फुल स्टॉप. These plexus controls motility of GI tract. These plexus controls motility of GI tract. Motility of GI tract, and particularly helping in strengthening the contraction and relaxation of muscles, of such muscles. Full stop. Next, serosa. It is a protective outermost superficial layer. It is a protective outermost superficial layer which are suspended / in contact directly with. It is a protective outermost superficial layer which are suspended / in contact directly with, which are suspended / in contact directly with the abdominopelvic cavity. Abdominopelvic cavity and thoracico-abdominal cavity and thoracico-abdominal cavity. Abdominopelvic cavity, जिस कैविटी में ये स्टमक लोकेटेड है, abdominopelvic cavity and thoracico-abdominal cavity. And thoracico-abdominal cavity. Full stop. It is composed of comparatively thick. अब outer layer है तो वो thick होगी ना, obvious है. It is composed of comparatively thick, simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium with areolar connective tissues. Aniket, why there is a areolar? It can be the normal one, no? Why it is need to be areolar? The outer one mostly. Anjali. Anyone? Why it need to be the areolar? Areolar means the areolar type of connective tissues, matlab a kind of cell which has a little more
areolar is come with the air or the area, मतलब a kind of, yes, to allow the movement, and movement तो major नहीं है इसका, outer one तो rigid होगी ना, outer one will not allow that. Movement is mainly done by that second and the third layer mainly. It is by the areolar air. Yes, absorb the shock. That is because it is present in that, suspended in the cavity. I have told that earlier in the class कि जब भी कुछ आप ऐसा सामान मंगाते हो जो फ्रिजाइल होता है, so that kind of bubble wrapping, that bubble wrapping is actually the type of areolar tissues या areolar cells. हाँ, तो outer layer ना कहाँ blood है इसमें? It should be the little simple, it should be the little thick, not very complicated. Outer चीज में आप ज्यादा चीजें नहीं रख रहे हो. The major function is that serosa is the protection, है ना? So protection in the form of any kind of injury, pressure, balance, and something like that. ठीक है? चलो. Full stop. Inferior एक normal point है ये. Next point में लिखो. Areolar connective tissues. Next. The inferior to diaphragm. Inferior to diaphragm. The serosa is also called. The serosa is also called. Serosa is also called visceral peritoneum, outer layer. Visceral peritoneum. लिख लो पेरिटोनियम पे एक स्मॉल पॉइंट्स, वो लिखो visceral peritoneum ऊपर. Small point right about the peritoneum. The peritoneum is the largest serous membrane. The peritoneum is the largest serous membrane, serous, serous membrane. Divided into parietal peritoneum and visceral peritoneum. Divided into parietal peritoneum and visceral peritoneum, which line with abdominal cavity, and cavity of other organs respectively. This is your stomach, ठीक है? And यहाँ पे आपका क्या है? Lungs. सारे छोटे छोटे organ है ना, they are just attached with each other, almost touch करता हुआ. ठीक है? They're very close to each other, so they may be rubbed to each other. Sometimes the injury cause चोट stomach में लगी and that may cause injury into the lungs, right? So again, inside that mucosa, submucosa, muscularis, and serosa. The serosa is divided into, that outermost is divided into two layers. What is that? The one is a abdominal serosa and another one is, one is parietal peritoneum. Okay? One is parietal peritoneum and another one is visceral peritoneum. Do we connect the visceral word with something else? देखो इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि साथ में आपको याद होता जाए. Do we connect the visceral word? What is visceral cavity, Aniket? What is simple visceral? Visceral organs are, suppose that simple question is a visceral organ. What you'll write? Visceral organs of orthopoda. What is the meaning of that online? Ma'am, internal? No. Mainly visceral is connected with your respiratory tract. ठीक है? Visceral cavity या visceral organ. ठीक है? Internal इसका एक broader term है अंजलि. ठीक है? So that is a visceral. तो ये जो आपका lungs है ना बच्चा, lungs is also made up of the multiple layer. ठीक है? Mainly two तो बना ही है. तो lungs की भी outer layer को हम लोग serosa ही बोलते हैं. Visceral cavity, it is a, जैसे कि अंजलि has said that visceral cavity is that kind of cavity where your important internal organs are located. But अगर लिखा है visceral organs
ऑफ द ऑर्थोपोडा, देन मेनली हमें वहां पे बात करना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में. दैट इज अ विसरल. जैसे 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जैसे उसमें विसरल रेस्पिरेशन है जिसमें ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं. सो देन वी डिवाइड बाइफर्केट इनटू लंग्स और द गिल्स. ठीक है, विसरल कैविटीज, इंटरनल ऑर्गन कैविटी. अगर स्पेसिफिक लिखा है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करें. ठीक है, चलो. तो ये आपका क्या है, लंग्स. इसका भी आउटर लेयर क्या है, सिरोसा. ठीक है, तो ये एक्चुअली हमने रिवर्स लिख दिया. पेरिटेनियल इस ये जो होगी वो एब्डोमेन की साइड वाली होगी, इस साइड वाली, और इसकी अप वाली क्या होगी, विसरल पेरिटोनियम. समझ आ गया? तो इसकी विसरल पेरिटोनियम और इसकी पेरिटोनियम, ये दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट क्या करी होंगी, टच कर. लंग्स में भी सिरोसा होती है. हाँ, लंग्स में भी विसरल ही होगी. हाँ, दोनों ऑलमोस्ट विद. बहुत कभी आप कट डायसेक्टेड बॉडी को देखोगे, सो दे आर जस्ट वेरी, बस एडजस्ट करके रखा है. दैट्स इट. ठीक है, चलो. मैम, यस, मैम जो आउटर लेयर सिरोसा है वो दो में डिवाइड, एक पैराइटल एंड एक विसरल. जो yes. विसरल आउटर साइड है और पैराइटल इनर साइड. yes, बच्चा. Visceral is the outer side. Parietal is little inner side. Parietal is facing the abdomen side, and visceral facing the, लिखा हमने उसमें ना, the parietal peritoneum and the visceral peritoneum with regard to the abdominal and that other organs respectively. मतलब parietal abdomen की साइड पर, visceral other organ के साइड पर. सपोज अगर मैं यहाँ पे लिवर बना दूं, यहाँ पे मैं पैंक्रियास बना दूं, हर जगह तो यही लेयर होगी, सिरोसा ही आउटरमोस्ट होगी, राइट? तो सिरोसिस. मतलब लंग्स की जो आउटर सिरोसा होती है, हाँ हाँ, उसको भी आउटर में सिरोसा ही बोलते हैं. हाँ, नहीं, abdomen वाली जो साइड होगी हमेशा उसको, मतलब दिस इज अ नेमिंग, दिस इज सिंपली अ नेमिंग कि विसरल साइड वी ऑलवेज गिव टू द लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी एरिया. तो इस एरिया में एब्डोमेन, सपोज दैट इफ वी टॉक अबाउट द सिरोसा ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, सो दिस इज डिवाइडेड इनटू द पैराइटल, सॉरी, दिस इज डिवाइडेड इनटू द विसरल एंड द पैराइटल. सो कैसे अरेंज करेंगे, विसरल विल ऑलवेज टू द लंग्स वाला साइड और द रेस्पिरेटरी वाला साइड. तो जिधर भी लंग्स वाला साइड होगा उसको हम लोग विसरल ही बोलेंगे. ठीक है, अच्छा, यू आर सीइंग कि लंग्स का अगर स्ट्रक्चर है दैट इज सिरोसा, तो सिरोसा में यहाँ पे डिवीजन हम पहले पैराइटल आउटर मोस्ट रखेंगे एंड इनर विसरल रखेंगे, क्योंकि विसरल यहाँ पे लंग्स को अनसाइड ऑफ द फोकस कर रहा है. हाँ, विसरल वर्ड इज वेरेवर. अब तभी तो मैंने जब अंजलि हैज सेड दैट विसरल मींस एब्डोमेन, विसरल नहीं. अगर लंग्स है प्रणव, अगर सपोज दैट दिस इज योर लंग स्ट्रक्चर, तो लंग में सपोज दैट ये सिरोसा है, दैट सिरोसा इज अगेन डिवाइडेड इनटू द विसरल एंड द पेरिटोनियल. अभी आउटर और इनर मत समझो. तो लंग्स में विसरल पार्ट इनसाइड में है कि यहाँ पर है? द एक्चुअली रेस्पिरेटरी एरिया ऑफ द लंग्स इज इनसाइड ना, एल्वियोलाई एंड दैट. तो लंग्स में इनसाइड वाले को हम लोग विसरल बोलेंगे और पैराइटल इज आउटसाइड. इसमें आउटसाइड वाले को विसरल बोलेंगे और पैराइटल इज. जिधर भी मेजर फोकस ऑफ रेस्पिरेशन का होगा देयर वी कॉल इट द विसरल. लंग्स में मेजर रेस्पिरेटरी का किधर है, इनसाइड और आउटसाइड. एज यू गो फ्रॉम आउट टू इनसाइड देन देयर इज अ विसरल थिंग ना. अगर आप बाहर जा रहे हो तब तो आपको क्या मिल रहा है, स्टमक मिल रहा है ना. जरूरत नहीं है. नहीं, जिधर भी आपका रेस्पिरेटरी एरिया होगा उसी को हम विसरल बोल देंगे. ठीक है, जैसे कि अगर इसको लोग हार्ट के सेंस में कंसीडर करें तो हार्ट का तो खैर कार्डियम अलग ही होगा. ठीक है, श्रीराम, डाउट है? Ask me. Wherever the word visceral will go, there's a respiratory means. Wherever the parietal, yeah. Right on. The parts of digestive system. Now the next heading, layers complete हो गया है. ठीक है, लेयर्स पे आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज में भी क्वेश्चन है और सीएसई में भी क्वेश्चन है, दोनों में ही क्वेश्चन है आपके. कितने पेजेस होगा, ऑलमोस्ट 2 पेजेस से प्लस है ना. ठीक है, राइट ऑन. द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. फर्स्ट माउथ डैश, फटाफट लिखो. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट. आल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी.
also called buccal cavity or oral cavity. Full stop. It is formed by cheeks. It is formed by cheeks, hard palates, soft palate, teeth, and tongue. Teeth and tongue. Okay. Write down next point. Cheeks form the lateral walls of the mouth. Cheeks form the lateral wall of the mouth. Cheeks form the lateral wall of the mouth and are covered by skin from outside and and mucous membrane from inside देखो यहाँ पे भी inside में क्या है mucus. If you will try to touch your cheek inside from inside, it will a little wet because that is a kind of mucus. ठीक है. Next, hard palate forms the anterior portion. Hard palate forms the anterior portion of the roof of the mouth made up of palatine and maxilla bone. Have you heard about this word maxilla somewhere else? What is that? My mouth part of insects. Yes, bacha, very good. Maxilla, mandible, है ना? Because that is in your syllabus. Syllabus में आपका एक बहुत important topic आता है orthopods का. Orthopods में दो ही topic ही आते हैं. एक आता है mouth part और एक आपका आता है नहीं आता. Digestive system नहीं आता, larvas आते हैं, है ना? Larvas आ जाते हैं और metamorphosis आता है. With the help of that, what are the hormones? एक Dyson जो hormone होता है, how they are converting from the larva to the adult. दो ही क्वेश्चन. ऑर्थोपोडा इतना बड़ा फाइलम है, या तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे या तो माउथ पार्ट आएगा, एंड दैट इज आल्सो इन योर 15 मार्कर इन जनरल, या तो लार्वा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, दैट इज अ मेटामॉर्फोस. ठीक है, यही आता है. तो उसमें व्हेन वी टॉक अबाउट द माउथ पार्ट, so there are different types, chewing, biting, sucking, sponging, है ना? तो उसमें we actually talk about that modification of these things. जो हमारे में, अच्छा कॉकरोचेस में या इंसेक्ट्स में स्केलेटन सिस्टम है? नो, पक्का? इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल तो है. क्यों भाई? काइटिन एक्सटर्नल इज लाइक दैट हार्ड कवरिंग, इंटरनल बोन्स का नहीं है. मैंने क्या पूछा? स्केलेटन सिस्टम है. ठीक है, चलो. तो उसमें द मैक्सिला, मैंडिबल, है ना, देन हाइपोग्लॉसिस, वही चीज कन्वर्ट होके मैमल्स में टफ हो गई. जैसे हाइपोग्लॉसिस है टंग, मैंडिबल इज दैट लोअर जॉ, मैक्सिला इज दैट अपर जॉ. यही तो लैब्रम एंड लेबियम, यही तो 5 पार्ट्स होते हैं. लैब्रम, लेबियम, मैंडिला, मैक्सिबल एंड हाइपोग्लॉसिस. समझ आ रहा है? दैट पार्ट बिकम मॉडिफाइड एंड बिकम सॉलिडिफाइड इनटू दैट कॉर्डेट. माउथ पार्ट में करेंगे. मैंडिला, मैक्सिबल, प्रणव. मैंडिबल इज लोअर जॉ, मैक्सिला इज अपर जॉ. उसमें भी वही पार्ट होते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट दैट माउथ पार्ट्स ऑफ दैट इंसेक्ट, उसमें भी हम लोग मैंडिबल एंड मैक्सिला पढ़ते हैं, as Ashali just said that. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट इज द अदर थिंग? दैट टंग, उनमें भी लेबियम और लैब्रम पाया जाता है एज अ टंग. लाइक अपर सॉफ्ट पैलेट, हाँ, लेबियम एंड लैब्रम इज अपर एंड द लोअर जो कनेक्टिविटी है. एंड देन हाइपोग्लॉसिस, दैट इज अ टंग. जो हमारे में वही उनमें भी है, इट जस्ट डिफरेंट नेम्स एंड दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर. चलो, राइट ऑन. हार्ड पैलेट फॉर्म्स द एंटीरियर portion of the roof of the mouth made up of palatine and maxilla bones covered with mucous membrane
It forms the bony portion. It forms the bony portion between the nasal and the oral cavity. Between the nasal and the oral cavity. Next part, teeth. Next part, teeth. Write down about the teeth, whatever you know by own in that 5 minutes. जो भी human teeth के बारे में पता है, just write down. Quickly, everyone, online you too. After that, I'll dictate. देखो अच्छा मैं बता देती हूँ short लिखना क्या है. First, write about the structure of the teeth. थोड़ा सा like 3 to 4 points. Then, क्योंकि teeth is already covered in your core data. I know some of the students have not covered that. Again, I'll cover it. But try to write by yourself whatever you know. ठीक है? Structure लिखना है, type लिखना है, arrangement लिखना है, and इनका function लिखना है. ठीक है? 13 हो रहे हैं. 20 पे I'll stop. 7 minutes I'm giving to you. Start writing about yourself. It's a very basic topic. बच्चों से 5th 6th से पढ़ा जाता है. किसके नाम नहीं पता? टाइप का. The animal teeth are mainly diphodont, 2 बार आते हैं. Heterodont, different type के होते हैं. And thecodont, the properly arranged, embedded in the jaw bones. जो भी आ रहा है लिखो. अच्छा ये तो पता है ना, मिल्क टीथ है, permanent teeth. Incisor, canine, premolar and molar. That are the permanent teeth. 2 1 2 3 है ना guys? Formula भी लिख लेना. And every one of you send your online जिन्होंने लिखा है मुझे send करना है. Now all of you have my number also. लिखो थोड़ा तो खुद से भी लिखो. Run off. Structure में there's a white part that is called enamel. ठीक है? That is the hardest one. And then root that is embedded in your jaw bones. Enamel. Just crown or enamel. जितना कर पाओ 7 मिनट में उतना कर लो. बट सारी चीजें एड्रेस होनी चाहिए. एनिमल बोलते हैं उसको. टीथ की पीडीएफ आप लोगों की सबके उस पे अपडेटेड है. मुझे पता है ये सबको पता है. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दैट. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे बट आपके पास नोट्स नहीं होंगे एंड यू नो द कॉन्सेप्ट.
दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की पेटी बांधने. Incisor, canine, canine, premolar, molar. ICPM. Incisor, सामने वाला, canine, it's a kind coney like, and premolar and molar. ऑनलाइन जब हो जाए तो लेट मी नो प्लीज. स्ट्रक्चर बना लो, अगर टाइम है देन मेक द स्ट्रक्चर टू. फंक्शन लिख लिया, डाइपोडोंट लिख लिया, हीट्रोडोंट, उनके भी फंक्शन स्ट्रक्चर, थीकोडोंट, कॉपी लो. हाँ ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टाइम. ये बस इतना नहीं नहीं. व्हेन यू हैव रिटन दैट बाबा अनिकेत, जस्ट हेटरोडोंट. क्या है हेटरोडोंट? द फोर टाइप्स ना, मेंशन दैट. हु विल वांट टू मेंशन डाइपोडोंट, थीकोडोंट जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. मेंशन ना, डाइपोडोंट क्या है, परमानेंट टीथ है, मिल्क टीथ है. आई हैव टोल्ड व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू नो, जस्ट मेंशन दैट. डन. फिट डाउन. ऑनलाइन हो गया. ऑनलाइन गाइस, विचिता, विशाली, अंजलि, नवनीता, शो. पेंसिल से क्यों लिखा है भाई? Aniket, have you mentioned about the mechanical breakdown? Mention किया. क्यों? इनमें इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और पहले मोलर प्रीमोलर होता है. प्री पहले then molar. So in these teeth they are not one of that milk teeth. Incisor comes in the milk teeth. Have you seen any child? Okay, so the incisor canine premolar and molar, they are the permanent teeth. But in the baby in which the milk teeth comes, they are the same, no, just absent of premolar. उनका फॉर्मूला होता है 2102 and adult have the formula of 2123. ठीक है, so they also have, इसको आप सिंपल लिख देते, except the premolars they all are found in the milk teeth too. (32 to 30), that's 32 teeth only. How can you mistaken the formula? That's 32 teeth. No, no, not at all. Give it a pencil. Animals are not connected with that. Animals is
harder part, the out one. If you will hit your teeth, will you get hurt? Like your teeth are getting hurt? No. But when the dentist pluck out the teeth, then we will get hurt. Because the root are supplied with the nerves. Not this hard part. Enamel is not supplied with the nerves. Okay? Crown part is the enamel, not connected. Crown part of the teeth is called enamel. 2123 होता है, 2124 नहीं होता. Aniket, what you have written the formula of milk teeth? Content is good, but वो थोड़ा सा problem. And Pranav, do you think that you'll say no and I'll agree with that? कौन सा करेगा? ऐसा करना यूपीएससी से कहना है कि सर प्लीज आई नॉट चीट बट गिव मी अ कॉपी, मैं आराम से लिख के घर से लेके आऊंगा. ठीक है? But that will not help in the practice ना Pranav. होमवर्क थोड़ी देना है मुझे. फुल स्टॉप, कॉमा, स्टेटमेंट होता है कुछ. नाउ आई नो दैट कि मुझे किस पे काम करना है तुम्हारे साथ. द स्टेटमेंट फॉर्मेशन इज नॉट गुड एनफ. घर से लिख के ले आना आराम से, है ना? थोड़ी 7 देना है ना? फिर तो साथ में करो ना, प्रॉब्लम क्या है? केनाइन 2 केनाइन है. काउंट द केनाइन. हाँ, नीचे नहीं है. इंसीटर सिर्फ 2 हैं. तो इंसीटर सिर्फ 2 पेयर है. काउंट इट. हाँ, और बीच 2 केनाइन्स के बीच में जितने भी टीथ हैं वो इंसीजर ही हैं. प्रणव, अनिकेत, ठीक है. देखो, टीथ में लिखवाऊंगी नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट अबाउट द टीथ. टीथ में ये एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज इन योर कॉर्डेट व्हेन वी कवर द कॉर्डेट, आप लोग अपने इसमें देखना, टीथ का एक प्रॉपर मैंने फाइल अपलोड कर रखा है पीडीएफ का, इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टीथ आर प्रेजेंट ओवर दिस. सब कुछ है उसमें लिखा है मैंने प्रॉपर. उस पीडीएफ का नाम है डेंटाइटेशन इन मैमल्स. जस्ट चेक इट आउट वंस. ठीक है? दिस डाइजेशन में आपका टीथ का काम नहीं है, बट यहाँ पर आया है, दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सो डेंटाइटेशन इज अ कॉन्सेप्ट जो आपका पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है. ठीक है? दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द पीडीएफ. नाउ लिसन. टीथ क्यों होते हैं? रिमूव क्यों होते हैं मतलब? एक्सप्लेन. So there's a difference when we talk about that evolution of the teeth. जैसे कि we have talked about that evolution of that alimentary canal. ठीक है? उसी तरीके से आपके कॉर्डेट के सिलेबस में evolution of teeth भी है. That is a concept dentation in mammals. अभी just listen everyone. ठीक है? थोड़ा सा concept देख लो. So what is about teeth? Online करा आप लोगों ने? भेजा किसी ने मुझे आंसर कॉपी? थोड़ा बाकी है. Wow. How many minutes you want more, Aishali? Chalo, look at everyone here. Okay. So teeth are actually not which we have. है ना? It's not like कि जितने भी animals हैं या जितने भी mammals हैं सब में यही teeth पाए जा रहे हैं. नहीं. So first of all, human teeth are which type? Human teeth are, अच्छा पहले तो structure देखेंगे, but उसके पहले भी human teeth are simply diaphodont. आप लोगों को जब भी टीथ का कुछ भी आ रहा है क्वेश्चन, आपको बस यही 3 वर्ड एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है? डाइफोडोंट, देन heterodont,
then heterodont, and then thecodont. Then thecodont. That means this is a type of human teeth. This is one of the type of the human teeth. That means इसके अलावा भी होते होंगे. So when we talking about that diphodont, diphodont means simple. Di means 2 times. In the humans, the 2 times teeth come. One is the milk teeth, and another one is called permanent teeth. मतलब humans में ये है. तो किसी और mammals में, in some of the mammals, it can be found the homodont teeth. Sorry, monophodont teeth. Monophodont teeth. अगर डाई है तो मोनो भी होगा और ट्राई भी होता है. ठीक है, that means mono means single time. What is this we are talking about? That is 2 times in the life span, है ना, 2 times in the life span. कुछ mammals में सिंगल भी होता है या कुछ कॉर्डेट में सिंगल भी होता है. ठीक है, समझ आ गया डाइफोडोंट? सिंपल. द मिल्क टीथ और द परमानेंट टीथ. अच्छा ठीक है, अब हीटरोडोंट पे आते हैं. व्हाट इज, इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है. अभी हीटरोडोंट को समझ लो. हीट्रो मींस सिमिलर, सॉरी हाँ, डिफरेंट टाइप. हीट्रो मींस डिफरेंट, डोंट मींस टीथ. ठीक है, तो किसी ना किसी में तो होमोडोंट भी टीथ होंगे. हीट्रो को ऑपोजिट क्या हो जाएगा? होमोडोंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हीट्रोडोंट? दैट मींस डिफरेंट टाइप्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइप्स? अब यहीं से वी विल कनेक्ट विद द फॉर्मूला. ठीक है, the human has 4 types of teeth. All the teeth structure different. Okay, what are the 4 types? The one is called the incisor, another one is called the canine, then it is called the premolar, and then it is called the molar. On the basis of that heterosity, we do have the dental formula too. ठीक है, okay. Human is a bisymmetrical organism. ठीक है, अच्छा. इंसीजर और इन सबके फिक्स नंबर होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि प्रणव के अलग है और श्रीराम के अलग है और मेरे अलग है. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, एवरी ह्यूमन हैज अ सिमिलर नंबर. अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी हैव द डेंटल फॉर्मूला. फॉर्मूला इज द स्टिक थिंग, है ना, इट डजंट चेंज. ओके, सो वी नो दैट दिस इज आवर टीथ सिस्टम. दिस इज आवर टीथ अरेंजमेंट. अपर एंड द लोअर जॉ. दिस इज अ अपर जॉ एंड दिस इज अ लोअर जॉ. ठीक है, नाउ कंसीडर हाफ ऑफ दैट. जो आपकी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ थिंग जो लेफ्ट साइड में है वही आपके राइट साइड में है. मतलब लेफ्ट और राइट आपको ऑलमोस्ट इक्वल है. दैट इज कॉल्ड द बाइलैटरल सिमेट्री. That is not only the concept of the bilateral symmetry, but at the same time, this is one of the concept of that best survivability. है ना, कुछ फिशेस जो आपकी डीप वाटर में रहती है, उनकी सिर्फ, अगर इमेजिन करो कि आपकी सिर्फ वन साइड की आई काम करे, तो will you be the better survival? You have to put so many force. Suppose अगर ये वाली आई सर है तो मुझे सारी एनर्जी इधर देनी पड़ेगी. If I have to see this time, then I have to rotate my whole neck to this side. That means it's one of the problem. Bilateral symmetry का significance है. आप लोग पूछते हो ना significance कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं significance. ठीक है, चलो. तो ये half left कर दें. This is a left side upper jaw and this is a right side upper jaw. ठीक है. अच्छा, ह्यूमंस में तो क्या है कि जो अरेंजमेंट अपर जॉ में है वही अरेंजमेंट लोअर जॉ में है. बट एक्चुअली इफ यू इमेजिन, अपर जॉ का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड है ना. लोअर जॉ का अरेंजमेंट थोड़ा सा स्प्रेड है, वाइड है. एग्जैक्टली. तो जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जस्ट लाइक हॉर्सेस, है ना, जस्ट लाइक द रैबिट. इनमें क्या होता है एक्चुअली, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डेंटल फॉर्मूला, वी टॉक अबाउट लेफ्ट और राइट इक्वल हो सकता है, बट अपर और लोअर कैन बी चेंज. तो इनमें उनमें भी यही अरेंजमेंट है. दैट इज अपर जॉ एंड दैट इज अ लोअर जॉ, बट इट मे हैव डिफरेंस कि लेफ्ट साइड का अपर जॉ और लेफ्ट साइड के लोअर जॉ में डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ हो सकते हैं. ठीक है, अब इसको रहने देते हैं, ह्यूमंस पे आते हैं. ठीक है, तो अपर जॉ में अगर कंसीडर करेंगे तो ह्यूमन के डेंटल का फॉर्मूला है 2, 1, 2 एंड 3 एंड स्लैश 2, 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो 2 क्या है इसमें? इंसीजर. 1 क्या है? कैनाइन. ये क्या है? प्रीमोलर. एंड ये क्या है? मोलर. ठीक है, नाउ कंसीडर द हाफ साइड ऑफ द बॉडी. जो आपके ये वाले टीथ दिख रहे हैं, सो दैट इज योर इंसीजर. फिर एक पॉइंटेड सा टीथ दिख रहा है, दैट इज योर
कैनाइन, जो कि आपका कार्निवोरस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, टू टियरिंग द मीट। उसके बाद आपका जो 2 अगेन दिख रहा है, दैट इज योर प्रीमोलर, है ना, जिसके डबल रूट होते हैं। उसके बाद जो 3 अरेंजमेंट है, दैट इज योर मोलर। ठीक है, सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द अपर जॉ एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द लोअर जॉ। सम ऑफ दैट, यस इशाली। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने आंसर भेज दिया है मेल में। एलसी, ठीक है, जल्दी करना है इशाली, टाइम के साथ। ठीक है, अब जैसे कि ये तो ह्यूमन का हो गया, अडल्ट का है ये। ठीक है, बट बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डाइफोडॉन, दैट मींस दिस इज अ परमानेंट टीथ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द परमानेंट टीथ। अब इस प्रणव एंड श्रीराम एंड अनिकेत, मेक हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टीथ? 32, make it 32, multiply by 2, count it, Pranav, count it, 2 plus 1, 3, 3 2, 5, 5 3, 8, ऊपर भी 8, नीचे भी 8, that means this side of jaw and this side of jaw, 8 multiplied by 2, 16 upon 16, ऐड कर दो। ठीक है, अडल्ट में ये होता है और बेबीज में क्या होता है? 2102। अगर आपको सिंपल फॉर्मूला याद है, then you can calculate, you can simply tell. Now, Shriram, which one among the following type of teeth is absent in the milk teeth? Pranav. Yes, because premolar की जगह पे हमने क्या लिखा है? तो बेबीज में प्रीमोलर्स नहीं ग्रो करते। समझ आ गया? ये एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। अब लास्ट वाला टॉपिक आ जाओ, दैट इज योर थिकोडॉन। That is your third type is your thecodon. अच्छा, देखो, the type of arrangement is called the imbeddation। जैसे कि ये आपका क्या है? मैंडिबल है, या ये सिंपल आपकी क्या है? जॉ बोन्स है। अच्छा, if I will tell you to remove your teeth, है ना, अगर आप डेंटिस्ट के पास सपोज गए हैं, आपने अपने टीथ को रिमूव कराया है, तो उसमें से ब्लड निकलेगा। क्यों? कभी हाथ में आपने टीथ लिया है, तो जो पार्ट दिख रहा है उसके अलावा एक और छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज एम्बेडेड इन द रूट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें इसके बेसिस पे 3 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। तो टीथ का स्ट्रक्चर एक्चुअली ये होता है, ये आपका एनिमल पार्ट हो गया और ये आपकी रूट सिस्टम हो गई, ये हो गया आपके प्रीमोलर और ये हो गया आपका मोलर, सॉरी ये हो गया आपका इंसीजर और कैनाइन, ये हो गया आपका प्रीमोलर और मोलर। जो पीछे वाले दांत है, दे आर द डबल साइज, राइट, तो उनमें 2 रूट्स होती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ये ऊपर वाला पार्ट हमें दिखता है, दैट वी कॉल द इनेमल और द क्राउन पार्ट, और ये पार्ट हो गया आपका रूट। तो रूट में आपके अगर सपोज ये बाय मिस्टेक चोट लग गई और इसका कोई पार्ट टूट गया, सपोज एनिमल का, ब्लड निकलेगा क्या? नहीं, बट व्हेन वील रिमूव दैट, व्हेन वील प्लक इट आउट, तो ये रूट्स जो होती हैं, जो आपकी जॉ बोन्स में अटैच्ड है, दिस इज एक्चुअली सप्लाइड विद द सेंसेशन। फील हुई है कभी ठंडा गर्म खाने पर? यहाँ पे आपके नर्व वेसल्स भी हैं और यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स भी। दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द थिकोडॉन। दैट मींस सम ऑफ द एनिमल हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट कि ये आपकी जॉ बोन है और टीथ बस इसके ऊपर ऐसे लग रखा हुआ है, दे डू नॉट हैव द रूट एम्बेडेड इन दैट। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में ये अरेंजमेंट पाया जाता है। ब्लड वेसल का क्या काम है? एक्सप्लेनिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग। टीथ में ब्लड वेसल का क्या काम है? ओके, सपोज दैट अगर आपने स्टॉप कर दिया कैल्शियम कंटेंट लेना, तो आपके टीथ वीक हो जाएंगे। टीथ वीक हो सकते हैं ना, कुछ लोगों के दांत बहुत ही कमजोर हो सकते हैं, सो उनमें न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? किससे दोगे? ठीक है, समझ आ गया? बस यही सब लिखना था आप लोगों को, और लास्ट में फंक्शन लिख दो, चुइंग, बाइटिंग, मैकेनिकल डाइजेशन, ब्रेक डाउन। ठीक है, अब तो नहीं लिखवाना पड़ेगा, लिखो। क्या? मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन फॉर नाउ। तो जैसे कि दोज पीपल हु डू नॉट हैव दैट डाइफोडॉन बट द मोनोफोडॉन, मतलब those animal who have the one type of teeth for the throughout the life, because mammals are the, or better say the humans are the best survivor। तो गॉड ने या नेचर ने या नेचुरल सिलेक्शन ने उनको सब चीज ऐसे दी कि जो बेस्ट फॉर्म में कर सके।
So when we talk about that human, हम लोग ये करेंगे जब हम लोग mammals का डिवीजन करेंगे, तो जैसे कि हम लोग करते हैं, तो when we talk about that milk teeth are first set of the teeth which are not that kind of permanent, मतलब a kind of trial period, क्योंकि उस समय उतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स कुछ भी ज्यादा अरेंज नहीं हो पाती थी. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कोई कट टू कट साइंस नहीं है, बट एवोल्यूशन टॉपिक है. ठीक है, दैट मीन्स जब छोटा बेबी होता है तभी देखो जो छोटे बेबी होते हैं वो इतना हार्ड मटेरियल नहीं खा पाते. द फूड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद देयर सर्वाइवल. सो जब आप छोटे बेबी को फूड दे रहे हो, दैट यू आर गिविंग द मिल्क और सम काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल. जब आप बिग मैमल, बिग बॉडी साइज, जब बिग अडल्ट को दे रहे हो, तो आप उसी अकॉर्डिंग आपका ये मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ. तो इसलिए जो परमानेंट टीथ है वो परमानेंटली, मतलब वो अडल्ट एज में आता है. So that adult age or that big grown stage will have the better survival. Teeth are one of that significance in the survival condition. ठीक है, क्रोकोडाइल्स और कितने मुंह होते हैं, तभी भी उनमें ये वाले टीथ नहीं पाए जाते, उनमें ये प्रॉपर एम्बेडेड टीथ नहीं पाए जाते, उनमें जो टीथ होते हैं वो बस अटैच्ड होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ग्लूड. उनमें ये रूट सिस्टम नहीं पाया जाता. हाँ, हट जाते हैं वो, तभी तो उनमें मल्टीपल टीथ पाए जाते हैं. तो जस्ट हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग बाइट. ठीक है, टीथ का एक आप लोग देखना, डेंटाइटेशन इन मैमल्स, मैंने एक पीडीएफ दे रखा है, जस्ट सी दैट. ऑल्दो जब आप लोगों का सिलेबस आएगा उस टाइम पे मैं इसको हार्ड कॉपी में दूंगी, ऑल्दो आई हैव, मेरे पास होगा ये, मैं देखती हूँ. ठीक है, टीथ हो गया. यस अंजलि. मैम हमारी जो टीथ होते हैं उनमें तो ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें तो ब्लड वेसल नहीं है, तो वो कहाँ से कैल्शियम ले रहा है? तो रिक्वायर्ड भी नहीं है ना उनमें, जो एक, हाँ दे डू नॉट, उनमें ये चेंज होते रहते हैं. अगर वो देखो, दिस इज अ टाइप ऑफ, जो हम लोग ये टीथ के हमने 3 टाइप्स लिखे हैं ना, दे आर एक्चुअली कोरिलेटेड विद दैट. ठीक है, अब जिनमें ये ऐसे स्टक्ड है तो ये ब्रेक होंगे ऑब्वियसली, है ना. ये मोनोकोडोंट है, बट ये आपके दे आर नॉट द थिकोडोंट, मतलब इनमें अटैचमेंट नहीं है. तो ये बार बार लाइफ टाइम, जैसे कि आपने रैबिट देखा है, रैबिट का जो इंसीजर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो कंटिन्यूअसली ब्रेक होता रहता है ना. तो वो आता रहता है, सारे टीथ नहीं आते बट वो इंसीजर आता रहता है. ठीक है, तो उनमें जरूरत नहीं है, उनमें क्योंकि चेंज होता रहेगा, आता रहेगा उनमें बाद में. इनमें बार बार आते रहते हैं टीथ. यस, दैट इज आल्सो कमिंग. जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट द डाइफोडोंट, फिर हमने लिखा मोनोकोडोंट. उसके बाद एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं पॉलीफोडोंट. पॉली मींस मल्टीपल टाइम्स इन द लाइफ स्पैन. ठीक है, ओके मैम. अच्छा, एलिफेंट में जो टीथ होता है वो क्या, कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन द एलिफेंट, क्या बोलते हैं, टस्क. टस्क इज मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, incisor, canine, premolar and molar. Incisor. Most of the people think that is a canine because slightly pointed होता है, but that is the modification of incisor. Do not do that mistake. ठीक है, वो incisor modification. चलो, right on. Tongue. Tongue. It's a freely muscular organ. It's a freely muscular organ in its anterior part. In its anterior part, while attached with the posterior part, while attached with its posterior part, called frenulum. Called frenulum. LUM, guys. Called frenulum. Full stop. It contains the various taste buds. It contains the various taste buds which are generally arranged. Which are generally arranged like this. Let's make the diagram.
यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा था ये, अरेंजमेंट ऑफ द टेस्ट बड्स, ये वाला कि स्वीट की कहाँ रहती है, बिटर की कहाँ रहती है, 22 या 21 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगर यूपीएससी क्रिस्पर कैस थ्योरी पूछ सकती है फिर ये तो पूछ ही सकती है। जिंक फिंगर पूछ सकती है अगर, यू नो जिंक फिंगर, सोचो ऑप्शनल वालों को नहीं पता है और प्रीलिम्स में उठा के दे रही है। व्हाट इज क्रिस्पर कैस थ्योरी अनिकेत? इट इज मेनली यूटिलाइज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी में भी डीएनए एडिटिंग, हाँ दैट इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर सिस्टम, डीएनए को कट करने के लिए क्रिस्पर कैस थ्योरी। चलो राइट ऑन। Next, soft palate forms the posterior portion of the roof. Soft palate forms. अच्छा, touch your tongue at the front side upper और फिर वो थोड़े बैक साइड में टच करें। जो फ्रंट साइड में टच करेंगे वो हार्ड है और जो बैक साइड में टच करेंगे वो सॉफ्ट। ठीक है, राइट ऑन। सॉफ्ट पैलेट फॉर्म्स द posterior portion of the roof of the mouth, which further forms the partition between the partition between oropharynx and nasopharynx Full stop. Soft palate is also covered with mucous membrane. Soft palate is also covered with mucous membrane. Uvula, UVULA, full stop. Uvula is a small muscular process. Soft palate is also covered with the mucous membrane. UVULA. Underline that. Uvula is a small muscular process. Hanging from the soft palate. Full stop. It prevents the entrance of swallowed food and liquid into the nasal cavity. Swallowed food and fluid या liquid into the nasal cavity. Everyone knows about the uvula, right? नहीं? कांच मिरर में जाके ऐसा ओपन करना माउथ and you'll see. So this is the tongue region, right? And tongue के ऊपर एक छोटा सा ऐसे hanging part होगा. That is uvula. Yeah. Okay? चलो. Mouth में आ रहा है ना? That is actually preventing the fluid and food back into the nasal. It's a kind of hindrance. It's a kind of mechanical hindrance. कुछ करता नहीं है. So कोई chemical function नहीं है. It is just preventing the entry of food into that back, because we know that yesterday we have talked about that this is your, ये आपका एक ये portion जा रहा है, ठीक है, and that is a soft palate, and एक ये portion जा रहा है. So ultimately ये दोनों जाके क्या हो रहे हैं? Combine हो रहे हैं. Ultimately both are combining. So यहाँ से जो भी चीज आप खा रहे हो और यहाँ से जो nasal passage आ रहा है, so यहाँ पे suppose that food यहाँ पे uvula is hanging down, so it may enter into that, so a kind of mechanical hindrance just create, and that region is now calling the pharynx is a common opening for the buccal cavity or that alimentary pipe and that respiratory pipe. समझ आ गया? Clear image है? चलो. क्या लिखा लास्ट में? It prevents the entrance of the food and liquid in the nasal cavity. Okay, na? Next, tongue is divided into two symmetrical lateral part
Full stop. It contains two types of muscles. It contains two types of muscles. That's very clear. Extrinsic muscle. Extrinsic muscles dash help in moving from side to side, from side to side, side, side to side, and intrinsic muscle alter the shape and size of the tongue, alter the shape and size of the tongue. For speech and following, for speech and following. Non-mygdading pharynx, non-mygdading pharynx. ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट मतलब है अरे it's just division. जैसे यहाँ पे if you touch the front side में it is a hard palate, but if you touch the back side with the help of the tongue it is little softer. मतलब it's a kind everything is coming in that buccal cavity. हाँ tongue में लिख सकते. आप सॉफ्ट पैलेट अलग से लिखोगे तो क्या ही लिखोगे. सॉफ्ट पैलेट का इज नथिंग रोल. सॉफ्ट पैलेट इज जस्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ द हार्ड पैलेट व्हिच इज डिवाइडिंग द nasal septum, nasal respiratory tract and that alimentary tract. That's it. Next, pharynx. It is a funnel shaped tube structure. It is a funnel shaped tube structure. It is a funnel shaped tube structure. It covered with the mucus and composed of skeleton muscles. It is covered with the mucus and composed of skeletal muscles. Full stop. It present in the region. It present in the region which extends from internal nares. It present in the region which extends from the internal nares, N-A-R-E-S, nares, and end of the buccal cavity. Internal nares, N-A-R-E-S, nares, and end of buccal cavity to esophagus, and end of buccal cavity to esophagus. Also, it is a common opening. It is a common opening for the respiratory tract and alimentary tract. It is a common opening for the respiratory tract and alimentary tract. Next point. It can be divided into three parts. It can be divided into three parts. Write down.
Laryngopharynx में लिखो. It contains the larynx or the voice box. यहीं पे क्या होता है? The Adam's apple. Have you heard about the Adams and Eve? What is Adams, Aniket? According to Christian mythology, the Adams and Eve were the, just like in the Hindu mythology, the Shraddha and Manu. Hindu mythology में सब कुछ खत्म हो गया था, so the two people will remain. The one female and the one male. The name was the Shraddha, female, and the Manu was the male. And they created the complete universe. Like we are the descendant of that Shraddha and Manu, according to Hindu mythology. In that Bible or the Christian mythology, the two people, the same concept, but just their name are different. The Adams and Eve. So that is why the male, जो voice box after the puberty hitting, the male have the become the heavier voice box, है ना? Low pitch but the heavy voice. Female की pitch बहुत high होती है. That is why they create the shrilled voice, है ना? Sound में एक chapter हम लोग cover करते हैं. So female have that large Adam. Suddenly आप लोग का जो tonsil होता है वो हल्का सा larger होता है compared to the males में. Exactly, males में जो tonsil होता है, that is actually Adam's and Eve. Adam's apple उसको, ठीक है? Right on. Next, esophagus. Next, हाँ उसके पीछे भी स्टोरी, वही एप्पल वाली स्टोरी भी उससे कनेक्ट करते हैं एवरीथिंग. तो रिलीजन का बस नहीं चला, वरना अलग साइंस बनती. ठीक है, चलो. Esophagus. It is a long pipeline structure. Pipeline structure, comma, 20 to 25 centimeter in length. 20 to 25 centimeter in length in general. In general, it starts from the end of pharynx. It starts from the end of pharynx and opens into the first or superior portion of the stomach. The first or the superior portion of the stomach. Full stop. It is a muscular tube. It is a muscular tube which simply connects. It is a muscular tube. अनिकेत कुछ छूट तो नहीं जाता आपका ना? It is a muscular tube which simply connects the pharynx to the stomach region. The stomach region where not any digestion occurs. Where not any digestion occurs. The pharynx to the stomach. The pharynx portion to the stomach. Actually, buccal cavity बोला जाता है because pharynx is also not the part of the alimentary canal. Okay? Pharynx to the stomach region where no digestion process occurs, but simply a passageway for the food.
but simply the passageway for the food. As its main function, to transfer the bolus from mouth to stomach, as its main function to transfer the bolus, underline that bolus, B-O-L-U-S, bolus from mouth to stomach. Acha, tell me one thing. So pharynx is divided into the trachea, the wind pipe is line continuing with the trachea, and the food pipe is continuing with the esophagus. So trachea पहले है कि esophagus पहले है? Trachea पहले. Why? Trachea पहले है. Why? Lungs is above the stomach. It will be the second point. What will be the major first point? Trachea Now, the trachea is supported by the rings. So there is a chance that since the air is passing through it, there is a chance of collapsing. Yes, bacha, very good. So trachea is the passageway where the air is passing, while the esophagus is the passageway where the food is passing. If something heavier will be put in that lighter one, it can collapse. As when we talk about the trachea, it is also made up of the hyaline cartilage, the C-shaped ring-like structure to support that. Right? So, right on. Next. To transfer the bolus from mouth to stomach, है ना? It lies posterior to trachea. It lies posterior to trachea, but anterior to vertebral column. But anterior to vertebral column. Vertebral column. Next. Muscular wall of the esophagus. Muscular wall of the esophagus changes as it travels down to the stomach. As it travels down to the stomach. As just proximal to the gastroesophageal junction, as just proximal to the gastroesophagus junction, there is a sphincter muscle. There is a sphincter, S-P-I-N-C-H-T-E-R, sphincter muscles, which prevents the regurgitation or the backflow, which prevents cardiac sphincter. Esophagus or the cardiac sphincter. Comma known as cardiac sphincter. लिख लो. Known as esophagus or the cardiac sphincter. Next heading, stomach. Next heading, stomach. It is a J-shaped bag-like. Next heading, stomach.
bag-like structure, bag-like structure, which mainly हमने कल वाले लेक्चर में करा था ना. What was the major function for the formation of the stomach? Pranav? When we have that in the very primitive fishes, the very simple, straight, long alimentary canal, that is the mouth and that is the anus. The first thing which is formed, what was the stomach? What was the function? Yes, because they have the multiple sources and they become wanted to the more complex body. So form the more complex body, first of all thing, what you need? The food. So first of all thing, यहाँ पे क्या हो गया? Dilation हुआ. And that dilated part, it created the, ये तो evolution है alimentary canal का, right? Stomach, which formed in the evolutionary process, of the alimentary canal, for the major purpose of storage of food, for the major purpose of the storage of food. Next, it is located just left of the midline. It is located just left of the midline between the esophagus and smaller intestine. Between the esophagus and smaller intestine. Full stop. It is mainly divided into 4 regions. It is mainly divided into 4 regions with two borders. Called greater and lesser curvature. Called greater and lesser curvature. So that is a great curve and that is a less curve. Okay? Greater and lesser curvature. The first part is cardiac because near to the heart. है ना, यहीं पे तो आपका हार्ट है. Suppose that, come again to this. किधर चला गया? किधर भी चला गया. So ये आपका जो esophagus है, यहाँ पे आपके lungs है ना, ये आपका हार्ट है and यहाँ पे ही आपका क्या है? Stomach region. So सबसे upper portion को क्या बोलते हैं? Cardiac. Actually mainly 3 पार्ट है, मेन बॉडी अलग से जोड़ दिया गया है. Somewhere you will see, suppose that अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, that stomach is divided into 3 part. That 3 part is cardiac, fundic and pyloric. ठीक है? Somewhere fundic को ही main body बोल देते हैं and somewhere अलग से main body बोलते हैं, then fundic बोलते हैं. That is a fourth. ठीक है? Cardiac, the upper region where the esophagus enters because it's located near to the heart. And heart को in general हम लोग heart के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? Cardiologist, right? That's right on. That is cardiac arrest, properly heart arrest. It is just located near the region. Heart में आता, cardiac it comes in the heart. Cardiac word is here. नहीं, cardiac is proper the muscular जो हम जैसे कि इसकी muscles regulate हो रही है ना, ऐसी वहां पे भी bundle of his और Purkinje fibers पाए जाते हैं, which are regulating that muscle. Heart is a muscular organ, है ना, एक contract, दूसरा relax, दूसरा contract. तो ये situation जब arrest हो जाती है, that is called the cardiac arrest. अब उसके reasons अलग अलग है. तो muscles का problem जो होता है, heart की muscle का problem, then we call that cardiac arrest. That the cycle is a closing and opening of the cycle is 0.8 second. जो हम लोग love और duck की voice सुनते हैं, that occurs in the, हो गए 1 second. 1 second से भी low में 0.5 divided into the systole and 0.3 divided into the diastole stage. वो cardiac is not, cardiac is just a wall. नहीं, right on. The first is the cardiac. It surrounds the cardiac orifice. It surrounds the cardiac orifice
orifice where the esophagus enters the stomach, where the esophagus enters the stomach. Full stop. It is the upper part. It is the upper part of the stomach area. It is the upper part of the stomach area. Next make the heading fundus या fundic. Next make the heading fundus या fundic, whatever. Fundus. Dash. It is superior dilated portion of the stomach. It is superior dilated portion of the stomach which has contact with नहीं भाई लगा है हाथ which has contact with the left dome of the diaphragm. आप भी क्लास देख रहे हो पढ़ा करो चुपचाप बैठ के left dome of the diaphragm. Thank you, Suraj. It is the middle or the main portion of the body. It is the middle or main body of the stomach. It is the middle or main body of the stomach. Third, pyloric. Third, pyloric. It is the end region of the stomach. It is the end region of the stomach, which is divided mainly into two parts. Which is divided mainly into two parts. Write down. Pyloric antrum. Pyloric antrum, which connect the main body of stomach, which connects the main body of the stomach and pyloric canal and pyloric canal. It is the end part, pyloric canal mein. It is the end part of the stomach. It is the end part of the stomach which opens into the small intestine, which opens into the small intestine. Next normal point लिखो. खत्म हो गया parts of that. अब stomach का एक normal point लिख लो. When the stomach is empty, when the stomach is empty, the mucosa lies in the large folds. The mucosa lies in the large folds. क्या बोलते हैं निकेत? Called दिलाई यहां पर जाएंगी. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी फिर? Called ruggy or wrinkles. Ruggy or wrinkles. That can be seen even with the naked eyes. That can be seen even with the naked eye. Full stop. Last point. The pylorus communicates with duodenum. The pyloric portion, conduct pyloric. The pyloric communicates with the duodenum via
via smooth muscle sphincter, via smooth muscle sphincter called yes, pyloric sphincter, which prevents the backflow of food, which prevents the backflow of food. Anjali, why there is a formation of ruggy in that internal side or the mucosal side of the stomach? Manisha, Navnita, why there formation of that ruggy or the wrinkled like structure in that inner side of the mucosa? Yes, Anjali. I'm sorry, I don't know. Koi nahi. Navnita, Vichta, tell me the answer. What is first of all ruggy? Yes, Ishali, go on. To increase the surface area of Yes, the stomach. exactly. So ruggy is like that internal. Suppose that this is a structure of the stomach. Okay. Suppose that from here to here you have spread a thread. So from here to here, the maximum centimeter maybe can the 15 centimeter, right? But a long thread. Suppose that you have a thread of the 40 centimeter, and you have to adjust in this area. So what you will do? You will arrange it like that. Okay, so that means a large surface area can adjust it. So now this area where the mucus glands are present, abhi jab itna tha, so number of the mucus gland maximum can be the 10. Okay, but now the number of the mucus gland can be more than 25 or the 30. So increase the large surface area wherever, guys, anywhere in your body or the mammal body, if something is occurring very important, where the surface area will gonna be increased. Just like the intestine, the maximum digestion, stomach, the mucus secretion, then the that tract, the vaginal tract, to pass out the sperm from that vaginal tract. वहाँ पे तो क्या helping in that movement of that वो है, but wherever something is important, है ना, वहाँ पे surface area increase करने के लिए such kind of folds will be found. Very simple, start from the mitochondria. है ना, mitochondria में क्या था? That outer layer is a continuous, while the inner layer is folded into the finger-like projection. Why? To contain the maximum amount of F0, F1 particle. Mitochondria बहुत important function कर रही है. That is your respiration. तो जो बहुत important function है उसके लिए surface area should be enough, big, but your body cannot have that big surface area. So ज्यादा से ज्यादा function कम area में हो सके. So what you will do? Increasing the fold, and that's how increasing the surface area. आजकल आप किसी भी religious places में जाओ, तो what is happening? जैसे कि मान लो this is a way or this is a temple and you can go here from here directly. But अभी उन्होंने क्या कर दिया है? Yes, now they are making the pathway like this. So what they are actually doing? They are trying to manage the large number of crowd. आपको डायरेक्ट जाने में मे बी सिर्फ 10 सेंटीमीटर कवर करना पड़े, बट अभी आप कैसे जा रहे हो? By moving this and that and this and that. So what happening is here? Pathway उतना ही, space उतनी ही लगी, right? They just increase the surface area. आप किसी भी आजकल religious places में चले जाओ, यही arrangement हो रखा है. That's very happy. चलो, next we'll do make heading histology of stomach. Histology of stomach has been histology of stomach, pancreas and intestine has been asked multiple times. एक पूछा जा चुका है. Histology. Internally we're gonna talk about हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक. थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे. ऑलरेडी जो हम लोग अगर सपोज दैट कुछ भी नहीं आ रहा है स्टमक के हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी दैट मींस इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आप ये 4 लेयर्स तो लिख ही सकते हो. ठीक है, दैट इज इंटरनल अरेंजमेंट और दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ठीक है, अपन करेंगे कल. Ma'am, should I get the contact details one more time? Should I? Ma'am, for the group, should I send my contact details one more time in the No, email? you have already sent on this mail now. jyoti. Yes, on which the answers are submitted. Okay, yeah, I have seen your answer. Okay, I'll see that. I'll check the spam also.
And Manisha, you also absent, na? Still you're not connected, right? Okay, I'll see that. Thank you, guys. Thank you.